अस्सलाम वालेकुम जी। अभी आज का सेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है। और ये मैम अंबर नवीद हमें विद इन अ मिनट और टू ज्वाइन कर लेंगी और वो इस टॉपिक को डिलीवर करेंगी आपके साथ। हम इसको इंटरेक्टिव रखेंगे, हम इसको कंसेप्ट को पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इस पे डिस्कस करेंगे कि हमारी जहाँ जहाँ जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं अभी, जिस जिस रोल में भी हैं, एचआर की स्ट्रीम में, और चाहे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहाँ पे हम किस तरह से इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो इसको काफ़ी डिटेल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और साथ में हम ये भी करेंगे कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि मॉडर्न एचआर जो कि इवॉल्व होता चला जा रहा है और अपनी जगह बनाता चला जा रहा है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन जो इंटरलिंक्ड कंपोनेंट्स हैं, इनका क्या क्या रिलेशनशिप अभी बनता है और किस तरह से ये वाले फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। तो मैं मैम अंबर ने हमें ज्वाइन कर ली है। और क्या मैं ऑडिबल हूँ आप सब लोगों के लिए? ओके, ग्रेट जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज के इस सेशन को आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, वहाँ पे हो सकता है कि ये वाले एलिमेंट फास्ट पेस्ड पे नहीं हो या पूरी तरह से एग्जीक्यूट या फंक्शनल नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त हैं, जो तेज़ी से एवोल्यूशन के ऊपर चल रही हैं, जहाँ पे बहुत तेज़ी से एचआर प्रोग्रेस कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, वहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट जो हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में, वहाँ पे आपको वो होते हुए नज़र आएंगे और उनका इम्पैक्ट भी होता हुआ नज़र आएगा। और इन तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन तीनों के इम्पैक्ट आपको विजिबल होंगे वहाँ पे। जी मैम, आप मुझे बिल्कुल, आपका कैमरा भी आ गया, आप अनम्यूट भी हैं। थैंक यू। नाउ आई एम हैंडलिंग ओवर द फोरम टू मैम अंबर नवीद। तो हम इसको फिर आज कहते हैं, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू मंसूर साहब। एंड आप पीपीटी आप चलाएंगे या मैं चला लूँ? आप चला लें बेटी, आप शेयर कर सकती है ना, मैंने इसमें ऑप्शन दी हुई है। अच्छा चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड the topic for today's topic is very interesting। मंसूर साहब ने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दे भी दिया है। सो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे कि there are three parts for this presentation या this topic, जिसमें एक चीज है ओडी, दूसरी है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड तीसरी है सीएसआर। तो अगर हम बात करना शुरू करें ओडी के ऊपर, तो ओडी इज अ काइंड ऑफ जिसको आप कहेंगे कि इट्स अ बिगर वर्जन, बिगर विजन है इसका। उसी पे जब हम जाते हैं नेक्स्ट, हम एक मिनट में जाइए, आपको स्लाइड शेयर कर लूं, देन वी कैन टॉक मोर। ओके, सो OD है, that is organizational development, then employee engagement, and then corporate social responsibility, जिसको हम कहते हैं CSR। तो before we start the session, all of you, those who are in already in HR, या जो ये काम कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं या जिनकी फील्ड है और जो बनाना चाहते हैं, just write it down in your notepads or in your journals. What do you understand by OD? OD से आपको क्या समझ में आता है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट से क्या समझ में आता है, और CSR से आपको क्या समझ में आता है? दिस इज जस्ट, यू हैव टू राइट इट डाउन फॉर योर ओन सेल्फ। मैं सिर्फ जब इसको
जिस पे हम जब फिर बात कर रहे होंगे, तो देन आई एम गोइंग टू आस्क यू कि आपने जो लिखा है क्या वो ही है. तो आई विल गिव यू 2 minutes टू जस्ट राइट इट डाउन अबाउट ओडी, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड CSR. अपने पास नोट्स में लिख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज 3 different terms used in HR. They are very important, but what do you understand by them? ये आप लिख लें. और उसके बाद जब मैं आपसे कहूंगी तो you can share that in our chat as well. तो chat box open है आपका. I'll give you 2 minutes. Just write it down, and then those who want to share, they can share in chat box. I would request that all of you should participate, because it's not about what we tell you or teach you. It's about what we share. Because we, when we are in these kind of trainings, we have to share the best practices. And best practices से हम एक दूसरे से सीखते हैं. तो अभी those who have write it down, they can raise your hands और share कर सकते हैं chat box में. Then we will start the session. You can just raise your hand, those who have written their thoughts about these 3 topics. Okay. You have to write about OD, employee engagement, and CSR in your own notepads. I can't see anybody's hand raised, so I'll wait 1 more minute and then I'll go on. Those who have written, if they want, they can share in the chat box. ये मैं आपसे इसलिए लिखवा रही हूँ कि इसके बाद हमने एक एक्टिविटी करनी है, और उस एक्टिविटी में ये जो आप अभी लिख रहे हैं ये आपको चाहिए होगा. तो इसलिए just write it down. I hope you all must have wrote by now. Anybody wants to share? Okay, if nobody wants to share, I'll move on. I would request to have an interactive session that will help you to understand and to share the best practices. So try to share your ideas. Okay, let's move on. If nobody is there to share, so let's move on. So organizational development, employee engagement, and corporate social responsibility. Organizational development क्या होती है? Organizational development में आपने भी, as I said, कि आप इसको सोचेंगे और लिखेंगे. Organizational development, employee engagement, and corporate social responsibility are all important aspects of successful business. Companies that prioritize these areas are more likely to have a positive impact on their employees and the environment. So दो चीजें इसमें important है, employees and the environment. So these things relate to the employees and the environment, or the work culture in which we are working. So CSR, I hope you all can see this slide. CSR, social corporate responsibility में क्या कुछ आ रहा है? Internal areas of responsibility, उसमें क्या है? Market responsibility है, economic efficiency है, legal compliance without loopholes. Internal areas क्या है CSR के? Legal compliance without loopholes है, market responsibility and economic efficiency है. नंबर 2 इसमें क्या? मिडिल एरिया क्या आ जाता है? इंटरनल हो गया, जो सिर्फ आपका इंटरनल है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही जो रिलेटेड है. मिडिल एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? वैल्यूज, कंपनी की वैल्यूज क्या हैं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स क्या हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसी हो रही है, और स्टेक होल्डर्स कौन से हैं.
So ये वो हैं जो कंपनी से भी रिलेटेड है एंड मिडिल में आ जाते हैं ये. Then external areas of responsibility क्या है? Contribution, corporate giving, कि आप क्या contribution करें to the community. And sponsoring, are you sponsoring some good initiative? Maybe students कर रहे हैं, maybe underdeveloped areas हैं, उनको आप कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी चीज है जैसे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर आप स्पॉन्सर करें. Is there anything which you are sponsoring? And social activities, volunteer work आप कितना कर रहे हैं? How much your company is involved in volunteer activities? Then the relation between the corporate and public sector. एक बहुत important जो corporate social responsibility का है, that is a relationship between corporate sector and the public sector. Corporation agents of positive change. क्या काम है हमारा? corporate किधर करना होता है हमने? Because you have to become the agents of positive change. Agents का मतलब ये है कि you are the ones who are bringing positivity amongst public sector and the corporate sector. Then corporate social responsibilities benefit for business. कैसे business को benefit करिए? It's promote sustainability. Sustainability को कैसे promote कर रहा है? Like if we are provide, जैसे भी हमने को जो हमने external का discuss किया कि sponsoring और कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर the company is giving back to the society, so to make the society sustainable. Then और फिर जो चीज आपने करनी है, like CSR में कोई चीज जो आपने स्टार्ट की है उसको आपने सस्टेनेबल रखना है. ऐसा नहीं है कि अभी आज तो हमने कर लिया और नेक्स्ट हम नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जांपल आपने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का इनिशिएटिव लिया है, एक साल तो आपने उन बच्चों के लिए डोनेशंस दे दिए, बट नेक्स्ट ईयर यू कांट डू इट. तो द थिंग इज दैट यू हैव टू डू द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सस्टेनेबल हो. देन बेटर वर्कफोर्स एंड कस्टमर पूल. इससे क्या फायदा है? आपका एक अच्छा वर्कफोर्स बनता है, कस्टमर पूल बनता है. इनोवेशन कैसे आएगी? यू हैव टू थिंक अगेन एंड अगेन कि हम क्या चीज कर सकते हैं इंटरनली, क्या चीज कर सकते हैं मिडिल में, एंड व्हाट कैन वी गिव बैक टू द सोसाइटी. ओवरऑल पब्लिक इमेज क्या है कंपनी का, एंड देन इंक्रीज प्रॉफिट्स. ऑल इन रिटर्न आपका प्रॉफिट जो वो इंक्रीज होगा. इंक्रीज कैसे होगा? जब आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी. एंड व्हेन योर वैल्यू इज स्ट्रांग एंड देन देयर वुड बी मोर एम्प्लॉय रिटेंशन. तो जब रिटेंशन ज्यादा होगी तो बिजनेस सस्टेनेबल होगा. तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाता है हमें CSR. Organizational development, the process of improving organizational performance and effectiveness through planned interventions in the organization's processes using behavioral science knowledge. Behavioral science क्या होती है? जिसको आप साइकोलॉजी भी कहते हैं, बिहेवियर साइंसेस होती है कि आप कैसे मैनेज करते हैं लोगों को. इफ यू नीड टू डेवलप योर कंपनी देन यू हैव टू मैनेज योर पीपल. सो हाउ गुड यू आर मैनेजिंग पीपल. Employee engagement में क्या है? The level of commitment and involvement an employee has towards their organization and its values. कि कितना committed है, and how well you are keeping the employee intact with the company. और फिर वही corporate social responsibility, the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, their local community, and society at a large. These all three things are essential for the success and sustainability of organizations. Understanding these areas is key to creating a successful and sustainable business. Now, what is OD? आप सबने लिखा था अभी, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लिखें कि what do you understand by OD, what do you understand by employee engagement, what do you understand by CSR. So let's move on. Diagnosing organizational effectiveness, a roadmap toward corporate sustainability. OD की definition and focus क्या है? Organizational development is a field of study that focuses on improving organizational effectiveness and employee well-being. It is a process of planned change that is implemented in an organization to improve its performance and health.
हेल्थ परफॉर्मेंस एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी, इफेक्टिव होगी, एंड इससे हम वी विल जज द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The benefits of organizational development: improved employee satisfaction. Organizational development practices can help create a positive work environment, leading to increased job satisfaction and morale. तो employee satisfaction क्या हमें देता है? Retention हमें productivity की तरफ लेके जाती है. Increased productivity. OD practices can help streamline processes and procedures, leading to increased efficiency and productivity. अगर आपकी productivity enhance हो रही है तो आप में there would be some innovation. तो enhanced innovation की तरफ next thing is enhanced innovation. OD practices can help foster an environment of creativity and collaboration, leading to increased innovation. Creativity means everybody has different ideas, innovation, and collaboration. Collaboration among departments, collaboration among employees, collaboration among external stakeholders that lead to increased innovation. Better adaptability to change. OD practices can help create a culture of flexibility and adaptability, allowing for better responses to changes in the environment. OD की जो भी practices हैं वो आपको help करती हैं to create a flexible culture. Flexible culture मतलब जहाँ पे acceptance है, adaptability है, and जो allow करता है better response to change, because whenever these things come, change is there. When you have to bring change, then you have to go through all this process. First, you have to make the sustainability of the employees, which will improve the productivity of the work, and it will enhance the innovation and better adaptability towards change. This is a complete chain. जिसमें आप काम करते हैं OD में, तो you bring change in the organization. So organizational development practices can have a positive impact on employee satisfaction, productivity, innovation, adaptability to change. Implementing OD practices can help organizations reach their goal more effectively. So reaching goal more effectively, you have to understand that how can we, now I'll stop sharing over here. And I would like you to share that what you have wrote earlier about OD. Anybody wants to share what did they write about OD? जी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें बताइएगा, क्योंकि ओडी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और जो अभी की ऑर्गेनाइजेशन जिनमें से हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिस बिजनेस में से हम सर्वाइव कर रहे हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन में हम सर्वाइव कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में ये ओडी की पूरी एक कैरियर स्ट्रीम डेवलप होती चली जा रही है. इवन आप देख सकती हैं, अगर कैरियर वाइज देखेंगे तो इवन आपको जनरल मैनेजर, डायरेक्टर ओडी और उस तरह के ना वीपी, वाइस प्रेसिडेंट ओडी, ये भी नजर आएंगे. यानी ऑफिसर से लेके आप समझ लें कि वीपी तक ये पूरी स्ट्रीम जाती है, राइट? Okay, somebody share. So OD basically comprises of change management process implementation. Change, yes, OD brings you towards change management, bring you to accept change, because change management is something different, but OD आपको उस point पे ले आता है जहाँ पे आप उस change की acceptance की तरफ ले जाते हैं. So yes, you are right, the change management is part of OD plus initiatives and interventions. Yes, this is very good, that initiative and interventions, this is the most important thing which is part of the OD. Objectives, yes, achieving the objectives of the organization. Yes, we do understand that there are bigger goals as well, there are smaller objectives as well. So to attain those bigger goals and aims,
we do have small objectives, and of course we achieve step by step. So achieving objectives is one part of OD as well. Anybody else want to share? Okay. Tehmeena, she said that it involves changes and improvement. It involves, yes, it involves or it bring acceptance to change. Change is evident. Change to aana hai. Things are evolving. The organizations are evolving. New things are coming up. So change is evident. So और OD क्या करता है? एक तो change को लेकर आता है और फिर acceptance लेके आता है for improvement. So good. Thank you for sharing. Anybody else want to share? मेरा एक क्वेश्चन है जी. ये अगर चेंज होना है तो फिर ये तो मेरे ख्याल से टोटली डिफरेंट थिंग होती है ना. मेरा ख्याल जहाँ तक है ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है ये तो इम्प्रूव करती है ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को. Yes, it does. But उसमें effectiveness को improve करने के लिए you need to bring some change, isn't it? नहीं तो चेंज करेंगे तो फिर कंप्लीटली तो सारा का सारा जो है वो चेंज नहीं है कंप्लीटली. बिल्कुल भी. इसलिए मैंने कहा कि चेंज मैनेजमेंट नहीं है ये इट टेक्स यू टुवर्ड्स चेंज एक्सेप्टेंस. क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट करना, आप इफ यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू अंडरस्टैंड दैट एक्सेप्टिंग अ चेंज इज समथिंग व्हिच वी स्ट्रगल विद. कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो भी कोई चीज हम चेंज करने लगते हैं तो वी डू पीपल स्ट्रगल. इवन दो कि अगर आपकी सीनियर मैनेजमेंट चेंज होती है या आपकी रिपोर्टिंग लाइन चेंज होती है तो भी आप इस पर स्ट्रगल करते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में क्योंकि इसीलिए हमने इसको प्रोसेस पूरा, आप उस प्रोसेस के थ्रू चलते हैं. आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हैं. सस्टेनेबिलिटी से जब आपका एम्प्लॉय सस्टेनेबल होता है फिर उसके लिए आप काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की तरफ जाता है. उसमें फिर आपके एम्प्लॉय एंगेजमेंट CSR वो इंटरलिंक्ड चीजें. सो यस, इट इज नॉट चेंज मैनेजमेंट. It takes you towards change and acceptance towards change as well. Any other questions? Thank you for sharing, Kizat, your point of view. And I would like others to comment as well. Because जब आप एक दूसरे से share करेंगे what you are going through or what you are how you are managing things in your organizations, it will help you to understand that how this phenomena of organizational development helps an organization to grow better. और जिसको हम बार-बार कह रहे हैं कि जी बिजनेस डेवलप करके देता है तो कैसे करता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हो रहा है तो how are they doing it. Okay, let's move on. Okay, higher employee retention. ठीक है जी, हमने वहां पहले हमने डिस्कस किया कि इम्प्रूव एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी है, एनहांस इनोवेशन है, बेटर अडेप्टेबिलिटी है. किस तरफ लेके गया? हायर एम्प्लॉय रिटेंशन. हम पहले सस्टेनेबिलिटी की जब बात करते हैं तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय एंगेजमेंट लीड्स टू ये बेनिफिट्स आ गए आपके एम्प्लॉय एंगेजमेंट के. जब वहां पे हमने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट तक तो हम सस्टेनेबिलिटी की बात की. आगे जब हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात करते हैं तो उससे क्या एंगेजमेंट का क्या मतलब होता है? दैट यू कीप योर एम्प्लॉय इन्फॉर्म्ड, एंगेज्ड, रेलेवेंट. आप उससे इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ शेयर कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जो there is somebody who is listening to the employee as well. So now this term is again which is used very frequently, and we talk about employee engagement in all organizations. But what we are doing for employee engagement that we are going to discuss further. पहले हम ये देख लेते हैं तो इसका हमें फायदा क्या होता है. एम्प्लॉय एंगेजमेंट का फायदा होता है कि इट लीड्स टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी. लॉयल्टी maybe, but yes, job satisfaction resulting in higher employee retention rates. हाँ, रिटेंशन रेट आपका हाई हो जाता है. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अगेन वही जो हमने पहले बात की, जब आप खुश होंगे, एंगेज होंगे, आपको सुना जा रहा होगा तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय इज गोइंग टू वर्क मोर हैप्पीली. And when the employee is working happily, they're more productive and efficient, leading to improved organizational performance. Then improved customer satisfaction. Yes, whatever business we are doing, जो हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं वो तो कस्टमर्स हैं. चाहे वो हम सर्विसेज इंडस्ट्री की बात करें या हम प्रोडक्ट्स की बात करें, जो भी चीज हम कर रहे हैं, in the end you have to satisfy the customer. So engaged employees are more likely to provide better customer service.
resulting in improved customer satisfaction. आपको उसके example ऐसे देते हैं, like for example front desk पे जो बंदा बैठा हुआ है, if that person is happy, engaged, सिर्फ पैसे से नहीं, उसके अलावा भी the employee is happy in the organization, उसकी environment अच्छी है, he get उसको सुना जाता है, he's being heard, तो वो खुश है, वहां पे खुशी से सुबह आता है काम के लिए, तो उसका रोल फ्रंट डेस्क का है। तो फ्रंट डेस्क पे अगर एक खुश इंसान बैठा होगा, तो उसी से जब कोई आपको, whether you are selling something, whether you are providing some services, your first impression is how you meet the first person in the organization. So if that person is happy and enjoying, then of course he's going to give an impression of which will increase the customer satisfaction. So it is essential for organizations to achieve success. It leads to higher employee retention, increased productivity, and improved customer satisfaction. Factors that derive employee engagement: autonomy, giving employees the freedom to make decisions and take ownership of their work. This is very important. Autonomy is something which in some organization it is not there. They do give the position, they do give the designations, but autonomy nahi hoti. People employees are not have the freedom to take any decision or take the ownership of work. Ownership तो हमें जरूरी है, जब किसी employer के लिए जो उसका employee अगर वो ownership नहीं लेगा तो उसके काम में उसके productivity कम होगी. Then growth opportunities, providing employees with the chance to develop their skills and progress in their career. Growth opportunities, again, as a main factor of employee engagement. इसमें आपकी trainings आ जाती हैं, L&D आपका सारा इसमें आ जाता है. Then positive work environment, creating a workplace that is supportive, collaborative and enjoyable. Supportive भी हो, मतलब उसमें आपको सुना जा रहा हो, collaboration हो, enjoyable हो, मतलब ऐसा हो कि जैसे मैंने अभी आपको example दी, the person who is going to the office, if he's going happily, then of course the work environment is positive. If the work environment is not positive, आपको ऑफिस जाने का दिल नहीं करता है. So you have to create such environment for your, if you are head of HR or working in HR, you have to create an environment for your employees or your colleagues that they should come happily to their offices. Recognition and rewards, acknowledging employees' efforts and reward them for their hard work. So employee engagement is driven by a combination of autonomy, growth opportunities, positive work environment, recognition and rewards. By understanding these drivers, organizations can create an environment that encourages employee engagement. Strategies for employee engagement. क्या strategies हो सकती हैं? Encourage clear communication. जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो जो आपका employee है उसको information होनी चाहिए. Provide regular feedback and open channels of communication to ensure employees feel heard and valued. Heard and valued के लिए there are different ways of doing it. Surveys आपके different होते हैं जिसमें they can give you feedback, they can give you suggestions, and to being heard, there are sometimes the line manager is responsible to heard the employee at any time when he or she is not feeling too good or too positive. So the environment should be such that one can have open communication. And then whenever there is a change coming up in the organization, like some changes are coming, some new policies are coming, you have to take the employees on board. So that communication should be with the employees. इससे आपके employees would be happy. Like simple, जैसे हमने पहले भी discuss किया होगा इसी training में, कि जब आप इसकी बात करते हैं, redundancies होती हैं या आपकी layoffs होते हैं, तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 6 महीने पहले से बताना शुरू कर देती हैं. तो उससे क्या होता है कि इन्फॉर्म होते हैं लोग एंड दे बिकम प्रिपेयर्ड कि ऐसा हो सकता है. ऐसा कई जगहों पे ऐसा होता है कि वन मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू गेट एन ईमेल कि आपकी नौकरी खत्म हो गई है. तो व्हाट काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन इज दैट? सो सच थिंग्स नीड टू बी addressed properly. Then implement career development programs.
offer training and development opportunities to help employees reach their career goals, organize, recognize employee achievements, rewards, disability career rewards to their hard work and dedication with recognition initiatives. Usme you can have small ceremonies for them where you can give them certificates, you can give them awards, you can give them some monetary awards as well. So by implementing these strategies, employee can foster a culture of engagement and create an environment where employees feel valued and motivated. Measuring employee engagement strategies for success. Employee surveys. Surveys can be used to measure employee engagement by asking questions about job satisfaction, motivation, and commitment. There are a number of ways to do these surveys. आप survey forms बना सकते हैं, monkey survey कर सकते हैं, QR codes दे सकते हैं where they can give their feedback. Feedback sessions, regular feedback sessions with employees can provide insight into their engagement level. इस तरह के sessions you can have coffee morning, or you can have evening tea, or a lunch with your employees where you can talk informally, or जिसमें से you can get a lot of feedback from the employees. Performance matrix, analyzing performance matrix such as attendance, productivity, and quality of work can provide an indication of employee engagement. अच्छा, क्या indication है जी? अगर employee is coming to the office regularly, of course he's happy, that is why he's coming. Productivity देखें जिस department में काम कर रहे हैं, that department is working, bringing business, then the employee is engaged. Measuring employee engagement is essential for understanding the overall health of a workplace. By utilizing surveys, feedback sessions, and performance matrix, employers can gain valuable insight into their employees' engagement levels. Okay, before we move on, now let's discuss about employee engagement. आपने पहले लिखा होगा employee engagement में जब हम शुरू में कर रहे थे. इसके बाद वो मैं आपको इसलिए बार-बार याद करा रही हूँ कि we have to do an activity in which I'm going to use that what you have wrote earlier. So employee engagement के जो अभी हमने areas discuss किए हैं, in these areas, which one do you think is the most important? कौन से चीज है जो सबसे ज्यादा important है, which will keep the employee engaged? What tool is most important? You can write in the chat box, or you can share your views. मैम मेरा ख्याल है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स में वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है. जब तक आप एम्प्लॉय को रिकग्नाइज नहीं करोगे वो कभी भी जो है ना अपने दिल से काम शाम नहीं कर सकेगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस चीज. अच्छा, what is your take on communication? मैम कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो ये है ना कि कम्युनिकेशन से भी मोस्ट ऑफ आपकी जो बैरियर्स वगैरह होते हैं ना वो क्लियर नहीं होते हैं. आप कम्युनिकेट कर लोगे एम्प्लॉयज के साथ, वो काफी हद तक जो है वो तो हो जाएगा आपके साथ, लेकिन ये कि जब तक आप उसकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो वो कभी भी जो है ना वो अपने बाय हार्टली जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं चल सकेगा. Kiधर are you in HR? आप HR जी मैम, मैं ऑलमोस्ट मैंने 2.5 years मैंने फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुजारे हैं, और मैंने 3 years वाह नोबल केमिकल्स के साथ गुजारे हैं, ऑल इन एचआर. अच्छा, इसमें मैं आपसे सिर्फ शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस और आपसे भी पूछूंगी. जब कम्युनिकेशन हम करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो सिर्फ उनकी एंगेजमेंट इतनी होती है कि उनको कोई सुन ले. उनको शायद पैसे की भी जरूरत नहीं होती, उनको उस रिवॉर्ड की भी जरूरत नहीं होती, बट दे वर डाइंग देयर कि दे शुड बी समवन जो उनकी बात सुन ले या उनकी प्रॉब्लम को सुन ले. आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया? मैम मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना वो आपको पता ही होगा, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ये आर्मी के अंडर आती है, तो वहां पर जो है ना वो उनको तो इजाजत ही नहीं बोलने की. मैम इजाजत बहुत कम, बिल्कुल वही ना कि मैंने काफी दफा जो है ना अपना वो व्यूज वगैरह भी सामने लाया हूँ, क्योंकि मेरे से ऊपर होते थे वो लेफ्टिनेंट कर्नल इन ड्यूटी थे, तो
उन तक भी अगर मेरे व्यूज पहुंच जाते थे ना, तो और मैं मतलब कि वहां पर ना वहां पे सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर ना अभी तक अगर आप देखो ना, तो वहां पे डॉक्यूमेंटेशन चल रही होती है, फाइलिंग वगैरह चल रही होती है। तो मैंने उनको नंबर ऑफ टाइम्स उनको मैंने ये बताया, मैंने कहा कि ये फाइल्स वगैरह आपकी किसी काम की नहीं होंगी, एक लेटर वगैरह गुम जाएगा तो आप 1970s के लेटर ढूंढना शुरू कर देंगे बैठ के। तो मैंने कहा आप अपने सॉफ्टवेयर में सैप वगैरह लेकर आए, ताकि हमारे लिए भी आसानी हो, आपके लिए भी आसानी हो। तो वो उन्होंने वो इस बात का इतना बुरा मनाया, उन्होंने मुझे पोस्ट आउट कर दिया हेडक्वार्टर से किसी और जगह के ऊपर। तो कम्युनिकेशन तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही जीरो थी उस तो जगह आप पे। देखो, फिर इसको आप HR कहोगे या एडमिन कहोगे? ये तो मेरे बाप को ही बेहतर पता होगा। हाँ, तो दिस इज एडमिन, दिस इज नॉट HR। तो जब हम HR की बातें करते हैं, आप जाहिर यू आर इन ऑर्गेनाइजेशन, हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेजिमेंटेड है, ट्रेडिशनल है। जब हम ट्रेडिशनल और रेजिमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ना, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, OD, CSR, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। और उनके सामने आपकी बेशक जितनी मर्जी हम बातें कर लें, आप रख दें, दे वोंट लिसन। बट मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है दैट इज ऑफ कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में मेरा एक्सपीरियंस ये है, दोज हु आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर, उनको आई कैन गाइड देम कि एट टाइम्स लाइक मुझे एम्प्लॉयर के साथ भी रहना है ना, मैंने सिर्फ एम्प्लॉय की तो नहीं सुननी कि उसको मैं इंसेंटिव दे दूं तो एम्प्लॉयर मुझे कहेगा कि आपने ये आप तो सिर्फ पैसे दे रहे हैं। तो मैंने तो एम्प्लॉयर को भी सुनना है और मैंने एम्प्लॉय को भी सुनना है। तो उसमें जो बेस्ट चीज एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए होती है, दैट इज अ लिसनिंग ईयर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एट टाइम्स यू जस्ट लिसन टू द एम्प्लॉय एंड आप उसको कुछ भी इंसेंटिव ना दें, यू कैन जस्ट पैट देम, दिल बी हैप्पी, क्योंकि उनको एट टाइम्स वो रिकग्निशन भी नहीं मिली भी होती जो हम सोच रहे होते हैं कि वो तो उसको मिल रही होगी। तो बीइंग एन HR, सबसे बड़ी जो चीज एम्प्लॉय को एंगेज करने के लिए है, दैट इज लिसन टू द एम्प्लॉय इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग ओनली, गिव टाइम टू द एम्प्लॉय एंड लिसन टू देम। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. It might be different, like you are sharing that in the organization where you have worked, they don't even think it as a tool. उनके लिए शायद communication is not a tool. उनके लिए एक वो I don't think so they do they give incentives or rewards in monetary rewards? मेरे ख्याल है वो भी नहीं देते होंगे। मैम मैं यही था कि जब तक मैं वहां पे था तब तक तो ये था कि रिवॉर्ड्स तो ऐसा नहीं, लेकिन वो इंक्रीमेंट टाइप का होता था। वो जब तक मैं था तब तक वो सही तरह चलता रहा, मतलब कि आफ्टर एवरी 2 years आपको इंक्रीमेंट वगैरह होता था। लेकिन एज सुन एज जब मेरी पोस्टिंग हो गई वहां से, तो उन्होंने वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया। मतलब ये तो एक एम्प्लॉय का राइट है कि वो इतना अर्सा काम कर रहा है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप उसको इंक्रीमेंट तो दोगे ही दोगे, बेशक वो काम सही करे या गलत करे। गलत करेगा तो आप उसको डिस्चार्ज ही कर सकते हो मैक्सिमम, अगर नहीं वो आपके उसके ऊपर आ रहा, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आ रहा। देखिए, लेकिन अगर हाँ, एक्सपेक्टेशन पे नहीं आ रहा, देन देयर नंबर ऑफ वेज टू हेल्प द एम्प्लॉय। आप उसको ट्रेनिंग कराते हैं, आप उसके साथ डिस्कस करते हैं, देन देयर डिफरेंट वेज। तो यस, मंसूर साहब, आप मुझे इसमें बताएं कॉर्पोरेट सेक्टर से कि व्हाट इज योर टेक ऑन कम्युनिकेशन, बिकॉज मुझे ये लगता है कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट। जी जी बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन तो सबसे ज़्यादा है कि आप कम्युनिकेशन के ऊपर रिलाय करते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है और कितनी ज़्यादा आपने ग्लास डोर पॉलिसी रखी हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये तो नहीं है कि आप चीज़ें छुपा के रखते हैं, बात नहीं करते, लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर नहीं करते। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ अगर हो जाता है, तो आप फिर समझे कि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के ऊपर कंप्रोमाइज़ हो रहा है। और फिर यानी कि जो एक डेमोक्रेटिक कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब लोग इक्वली चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो फिर रहता नहीं है, ओनरशिप खत्म हो जाती है लोगों की, लोगों की एंगेजमेंट खत्म हो जाती है। अभी जैसे there's a comment that employee engagement is critical to an organization's success. All activities that encourages and motivates employee and keep their morale high helps instilling integrity and grit. A place is because of people and they will define the culture. Communication within organization is integral. All decisions must be well informed. Okay, this is something which is a complex कमेंट, बट मैं इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगी कि जो सबसे पहली चीज होती है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वो चीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसपे कुछ भी नहीं लगना, ना आपके पैसे लगने हैं, हाँ आपका टाइम और एफर्ट लगेगा। और उसमें आप जो हम बिहेवियर साइंसेस की बात करते हैं, यहाँ आपके बिहेवियर साइंसेस आ जाते हैं। यहाँ आपको ये चीज
समझने की जरूरत होती है कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन और इस डिपार्टमेंट में अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो विच एरिया हैव टू एड्रेस. फॉर दैट योर कम्युनिकेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, आपके फीडबैक्स होने चाहिए, आपके पास सर्वेज होने चाहिए, एंड देन इट कम्स टू अनदर थिंग विच इज रिवॉर्ड्स, एंड जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं कि जी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मॉनेटरी अवार्ड्स हो सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ सेरेमनीज कर सकते हैं. So employee engagement is very, very crucial, as it was written, that it is critical and crucial in a sense कि आपको जो भी डिसीजंस आप ले रहे होते हैं कंपनी के लिए, दे शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड. जैसे मैंने आपको कभी एग्जांपल दी थी इसकी, आप लोगों की किसी ऑर्गेनाइजेशन में ले ऑफ्स होते हैं? एनीवन हु हैज एक्सपीरियंस ले ऑफ्स? मैम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में होते थे, लेकिन वो ये था कि डिसिप्लिनरी एक्शंस के ऊपर होते थे, वैसे नहीं वो ले ऑफ करते थे. वो करते भी थे तो बहुत कोई हार्ड फास्ट कोई हो तो फिर करते थे, लेकिन अदरवाइज ये था कि वो डिसिप्लिनरी एक्शंस अगर कोई हो जाते थे तो फिर उसके वो ऊपर ले तो ऑफ होते थे. कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे हो जाता है ना. लेकिन जैसे मैम कोड ऑफ हाँ, लेकिन अगर किसी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ले ऑफ्स हुए थे बिकॉज कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती थी. वो कंपनी सस्टेन कर गई थी उस ले ऑफ को जिन्होंने उस चीज को वेल इन टाइम एड्रेस किया था और इन्फॉर्म रखा था, अपने एम्प्लॉइज को बताया था साथ साथ कि दैट द कंपनी इज गोइंग दिस, फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, हम ये नहीं रन कर, साथ साथ बता रहे थे और साथ साथ इन्फॉर्म कर रहे थे कि ये हो सकता है. किसी ने एब्रप्ट डिसीजंस नहीं लिए थे, बट आई हैव एक्सपीरियंस दैट देयर वर फ्यू कंपनीज जिन्होंने एब्रप्ट डिसीजंस लेके एक एक दिन में भी लोगों को थैंक यू किया था. तो वो चीज भी इफेक्ट करती है. बट आप इंटरनेशनली प्रैक्टिस देखें, इंटरनेशनल मार्केट में या कॉर्पोरेट में ले ऑफ्स आर वेरी नॉर्मल और एवरी 3 मंथ्स ले ऑफ्स होते हैं. बट वो उन 3 मंथ्स में ले ऑफ, जो एरियाज हो या जिन चीजों को ले ऑफ करना होता है उनको वो एड्रेस कर रहे होते हैं. हाउ? थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू टेलिंग पीपल दैट दिस माइट हैपन, दिस देयर द कंपनी इज गोइंग टुवर्ड दिस साइड, ये लोग इसमें आ सकते हैं, ये लोग नहीं आ सकते. लाइक फॉर एग्जांपल अगर सैलरी ब्रैकेट है तो एक सैलरी ब्रैकेट बता देंगे कि ये सैलरी ब्रैकेट जो है कैन बी अफेक्टेड, और ये लोग जो हैं मतलब कोई एज ग्रुप दे सकते हैं कि दिस एज ग्रुप कैन बी अफेक्टेड. तो लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं. सो व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर देन इट द शॉक इज लेस, क्योंकि आपको हो रहा होता है अच्छा ऐसे होगा, अच्छा ऐसे होगा. तो एक तो शॉक लेस होता है और जो ले ऑफ नहीं होते उनका मोरल बूस्ट हो जाता है. तो इट इज अ डबल एज थिंग. सो दिस इज हाउ यू वर्क ऑन एम्प्लॉय एंगेजमेंट. Anything else? Anybody else want to share something? Then we move on. Okay, let's go to the next one. So next is CSR, corporate social responsibility. What it means for organizations. Corporate social responsibility is an important concept for businesses to consider. It involves a company's commitment to operate ethically and contribute to society in a positive way. Acha, it involves companies' commitment to operate ethically and contribute to society in a positive way. Ethically एक तो पहले वो contribute करे और society को भी positive way में contribute करे, pay back करे. So इसका benefit क्या organizations को? Positive brand image. CSR initiatives help organizations create a positive brand image and reputation in the eyes of customer, stakeholders and the public. अच्छा, brand image के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं. When you are talking about current scenarios, तो brand image is very important. जो भी industry है, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, whether service industry है या products है या जिस भी industry में आप काम कर रहे हैं, brand image is very important. हम जैसे अभी भी हम discuss कर रहे थे, there are some traditional or regimented organizations, there are some international organization जिनके standards, and there are some private organization जो हमारी locals हैं. But everybody is working toward brand image. So CSR initiative help organizations create a positive brand image and reputation in the eyes of customers,
अच्छा, अब हम काम किस लिए करते हैं? कस्टमर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए एंड पब्लिक इमेज के लिए। तो CSR क्या करेगा? हमारे ब्रांड को की इमेज को इम्प्रूव करेगा। कस्टमर लॉयल्टी, CSR initiative can help organizations build customer loyalty by demonstrating a commitment to social responsibility. अब एक चीज अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमने जो हमारा कस्टमर है, क्या क्या वो लॉयल है? क्या हमेशा वो हमसे ही चीज लेगा, या he or she is going to search for other organizations और other companies as well? तो उसके लिए भी उनको हमने एक ब्रांड इमेज देना है और उनके लिए हमने कुछ करना है, उनको कुछ पे बैक करना है ताकि वो हमारे साथ लॉयल रहे। फिर attracting top talents, organizations that demonstrate a commitment to CSR can attract top talent who are looking for employers with strong values. So जहाँ पे CSR एक्टिविटीज हो रही होती हैं और क्योंकि इंटरनल भी हैं और मिडिल में भी है, एक्सटर्नल भी हैं, तो वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हमारे पास टेलीकॉम में बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो CSR पे बहुत अच्छा काम करते हैं। देयर आर अदर मल्टीनेशनल कंपनीज, तो पीपल डू वांट टू जॉइन दोस कंपनीज। सो ये एक आपको बेनिफिट है CSR का, यू गेट द बेस्ट टैलेंट। इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, CSR initiative can help organization contribute to the development of their local communities, जिसको हम कहते हैं giving back to the society. So overall, CSR initiatives are important for organizations as they can help create a positive brand image, build customer loyalty, attract top talent, and contribute to community development. CSR framework. अच्छा, framework ISO 26,000 description के international standard providing guidance on social responsibility. Global reporting initiative, organizations that promote economic, environmental, and social sustainability. Then United Nations Sustainable Development Goal, SDGs, 17 global goals to end poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all. जो वैसे तो ये 17 इसमें लिखे, 30 SDGs हैं जिनके ऊपर दुनिया काम कर रही है। यूनाइटेड नेशंस की ये SDGs हैं जिसपे हर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, लेकिन जो हमने यहाँ मेंशन किए, पॉवर्टी है, प्रोटेक्ट द प्लैनेट है, इंश्योर प्रॉस्पेरिटी टू ऑल है, फिर इसमें एजुकेशन है, वाटर है, और बहुत सारी SDGs हैं जिनके ऊपर हम ऑर्गेनाइजेशंस कैन वर्क। CSR initiatives in action. Philanthropy, donating money or resources to a charitable cause. Environmental sustainability, taking steps to reduce the environmental impact of an organization's operations. An employee volunteering program, organizations offering employees the opportunity to volunteer their time and skill to a charitable cause. Simplest is philanthropy, आप पैसे दे देते हैं आप चैरिटेबल कॉज के लिए। देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारा SDG भी है जिसमें एनवायरमेंट, ग्रीन एनवायरमेंट के लिए काम करना है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर रही हैं। जो इसमें देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, जैसे हम लोग पेपरलेस एनवायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिससे आप रिड्यूस करेंगे बहुत सारी पोल्यूशन को, नॉइज पोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। सो दीज आर एनवायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए किया जाता है। फिर एम्प्लॉय वॉलंटियर प्रोग्राम्स, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कॉमनली होता है, लाइक जो डॉक्टर्स हैं वो अपने कैंप्स लगाते हैं, फ्री कैंप्स लगाते हैं, जो टीचर्स हैं वो फ्री टीचिंग कराते हैं। इसी तरह जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री, वो सैंपल्स अपने फ्री देते हैं या लोगों से जाके, दे आर ऑल कम इन। जो फ्री सैम्पलिंग है, खैर वो तो इसमें नहीं आता, इसमें तो वॉलंटियर आता है, जो लोग खुद जाके अपना टाइम और एनर्जी स्पेंड करते हैं। The interconnected benefits of OD, employee engagement, and CSR. OD is the improvement of organizational effectiveness and health through planned interventions in the organization's processes. OD improves organizational culture, structure, and processes to boost efficiency and effectiveness. Employee engagement is the emotional connection an employee has to their organization, job, manager, and colleagues. Engaged employees are more productive, satisfied, and loyal.
Corporate social responsibility is an approach to sustainable development that economically, socially, and environmentally benefits all stakeholders. CSR initiatives may include environmental, social, and labor practices. Organizational development, employee engagement, and corporate social responsibilities are interconnected, and a positive organizational culture can foster engagement and CSR initiatives. Okay, before we go to the case study, I'll just leave it here. इससे पहले कि हम केस स्टडी पे जाएं, बिकॉज इसमें हम थोड़ा टाइम लगाएंगे. जो 3 चीजें हमने डिस्कस की हैं, तो CSR के ऊपर व्हाट्स योर टेक ऑन CSR? How many organizations you think that they are working for CSR? So whoever wants to communicate or give their comment on this, that do you think the CSR helps the organization to build their brand image? आपको लगता है कि CSR जो है वो ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करता है, या आपको लगता है कि ब्रांड इमेज के ऊपर काम करना चाहिए? खामोशी का मतलब है कोई नहीं सुन रहा. और सिर्फ मैं और आप बातें करेंगे. हाँ, ये भी है, सही है. अच्छा, अब CSR के साथ साथ एक और चीज भी चल रही है ना, जो ESG के ऊपर बात करते हैं, एनवायरमेंटल और सोशल, और साथ में गवर्नेंस. जी ठीक है. और उसके ऊपर है कि जी सस्टेनेबिलिटी का एक बात करते हैं लोग ना. तो एम्प्लॉय ब्रांडिंग के हवाले से तो CSR बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम ऑर्गेनाइजेशन इतना कुछ अर्न कर रही है, सोसाइटी से ले रही है, तो सोसाइटी को पे बैक भी कर रही होती है ना. अब देखें, मैं चले इनमें से तो कोई हमें नहीं बता रहा, लेकिन मैं और आप आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको लगता है कि ब्रांड इमेज इज इम्पोर्टेंट? जी बिल्कुल. आजकल के जो कट थ्रॉट कंपटीशन है, सिनेरियो है, इसमें वहाँ पे ब्रांड इमेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है. कि देखिए, बेस्ट प्लेस टू वर्क के अवार्ड दिए जाते हैं, इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं ना, तो लोग फिर चाह रहे होते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन को जाके ज्वाइन करें. और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें अपने कैरियर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए. तो वो फिर वो यानी कि वहाँ पे एक तरह का वो उनकी विलिंगनेस हो, वो जाना चाह रहे हो. और वो जैसे कहते हैं ना कि हार्वर्ड में एडमिशन लेना आसान है, वॉलमार्ट में जॉब करना डिफिकल्ट है, जॉब लेना डिफिकल्ट है. क्यों? कि वहाँ पे उसका कल्चर ऐसा है, उन्होंने कल्चर ऐसा बना के रखा हुआ है. पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह मैं नाम लेना चाहूँगा, एंग्रो है, या और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, एंग्रो के बहुत सारे ग्रुप्स हैं. या इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी साइड पे सिस्टम इंटरनेशनल है, या अगर टेक्सटाइल के अंदर जाएं तो इंटरलूप है, जो जिन्होंने अपना ब्रांड इमेजिंग जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया ना, कि ब्रांडिंग इस्टेब्लिश हो चुकी है डिफरेंट इनिशिएटिव की वजह से. और CSR भी उनमें से एक कंट्रीब्यूट करता है. और CSR के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, तो हमारे वहाँ पे CSR के बड़े इनिशिएटिव होते थे. हमारा वहाँ पे एक CSR इनिशिएटिव था जिसका नाम था पहचान. तो वहाँ पे जो कराची में मछेरों की बस्तियाँ थी, वहाँ पे स्कूल आए हुए थे, और वहाँ पे स्कूल को ऑन किया हुआ था. और पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है कॉर्पोरेट सेक्टर में जिन्होंने TCF, जो सिटीजन फाउंडेशन स्कूल है, वहाँ उनके स्कूल्स को ऑन किया हुआ है एज अ CSR इनिशिएटिव. ये तो उनसे उनके ब्रांडिंग तो बहरहाल अच्छी होती है ना. बिल्कुल. सो पॉइंट हमारा यही है इसको डिस्कस करने का भी कि लाइक मेरे वाले कमेंट भी किसी ने शेयर किया है. Yes, CSR impacts organization brand and is important as it helps in attracting top talent and improves employee retention and commitment. Yes, very well said. क्योंकि जब हम एम्प्लॉय ब्रांडिंग पे काम करते हैं, CSR उसमें हेल्प करता है हमें. क्योंकि आज हमारा टॉपिक एम्प्लॉय ब्रांडिंग तो नहीं है, CSR है. लेकिन CSR जब आप अपना एक इमेज कम्युनिटी को देते हैं, तो उससे आपका ब्रांड इमेज बनता है. और ब्रांड इमेज से आप ऑफ कोर्स अगर आप
अब जैज का नाम ले लें, आप टेलीनॉर का नाम ले लें, तो इनमें 3-4 कंपनीज हैं, तो एक के ऊपर लोग जाएंगे। टेलीनॉर का लेंगे तो एवरीबडी वुड लाइक टू गो टू टेलीनॉर या जैज। क्यों? बिकॉज उन्होंने अपने ब्रांड को डेवलप किया है, उसके ऊपर उन्होंने उसका एक इमेज बिल्ड किया है। अंदर क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता, लेकिन उनके ब्रांड का इमेज तो है, एंड एवरीबडी वुड लाइक टू ज्वाइन देम, तो वो आपको बेस्ट टैलेंट तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो यस, दिस इज गुड। नाउ मूव ऑन, लेट्स। अच्छा, ये केस स्टडी है। I want that we should work on this. We should read this case study. मैं आप लोगों को I'll give you 10 minutes. इसको read करें, फिर इस पे हम discuss करते हैं। नहीं, ये वाला नहीं है, पिछला है। Integrating OD, Employee Engagement CSR Initiative Case Study 2. Case studies are a great way to illustrate how organizations have successfully integrated OD, Employee Engagement and CSR activities. This case study will provide an example of how these initiatives can combine to create a successful outcome. I will give you 10 minutes to read this, and then we are going to discuss that what have you understood by this. Abstract है, keywords क्या, introduction क्या है। इस वक्त हुआ है, just let me see the time. It's at 8:30, so 8:40 के ऊपर हम इसको रीजॉइन करते हैं, बिकॉज आप थोड़े लोग हैं, वरना हम ब्रेकआउट रूम्स में चले जाते हैं, लेकिन वी आर जस्ट 5-6 people. So instead of doing group work, we can do first read and then we'll have a group work. और जो मैंने आपको पहले बोला था कि आपने अपने 3 चीजें लिख ली हुई हैं, उसको हम इससे रिलेट करेंगे। तो take 10 minutes to read it, and then we'll have a group discussion.
Okay, it's been 10 minutes. So आपने सबने read कर लिया है? Let's discuss that now. So let's discuss this. Who would like to discuss के क्या थी case study है क्या ये? Anybody? I think nobody. आप में से किसी ने पढ़ा है? Because अगर नहीं पढ़ा तो we should move on because मैंने 10 minutes इसलिए आपको दिए थे ताकि आप इसको read करें. Yes, खजर, would you like to share कि आपको क्या समझ आया इस case study से? मैम मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उससे मुझे यही पता चल रहा है कि ये जो CSR होता है यूएई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो यही शो कर रहा है कि वो कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं, उनकी कंपनीज कितनी एफर्ट्स कर रही हैं यूएई के अंदर के कंट्रीब्यूट कर सकती हैं वेलबींग सोसाइटी की वेलबींग के लिए। अगर आप और इसका एग्जांपल लें, चलिए आपने अगर इसको पढ़ा है, बाकी आई डोंट नो किसी और ने पढ़ा है, बट यूएई का सबको पता है। यूएई को अभी आप क्या समझते हैं? इज यूएई अ ब्रांड? मैम मैं ये वही देखा जाए ना, अगर मोस्टली लोग जो हैं वो प्रेफर यही करते हैं कि जी अगर हमारी वेकेशंस वगैरह हो रही हैं तो विल हेड टुवर्ड्स यूएई, क्योंकि यस। वहाँ की फैसिलिटीज वगैरह को देख के और अदर चीजों को देख के हाँ, तो अट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने कैसे अपनी ब्रांड मतलब उन्होंने तो एज नॉट इवन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज यूएई इज अ प्लेस, उन्होंने दुबई को ही आप देख लें, उन्होंने कैसे हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रांड बनाया है। कैसे? थ्रू सीएसआर। उन्होंने सीएसआर को अपना मतलब एक मोटो बना लिए। दोज हु हैव विजिटेड यूएई या इवन दुबई या अब कतर को देख लें, these days Qatar is booming और everybody wants to work in their companies. क्या किया उन्होंने? फीफा कराया। फीफा क्या था? सीएसआर। उन्होंने अपना पैसा लगाया कंपनीज ने और दुनिया में अपना इमेज बना लिया। तो सच एग्जाम्पल्स हम एक मतलब जो जो अफोर्ड कर सकते हैं उसने राइट चीज के ऊपर स्पेंड किया, स्पोर्ट्स के ऊपर। तो स्पोर्ट्स इज समथिंग विच इज acceptable by everyone. So now let me share the next slide. Okay, ये तो हमने इसका पढ़ा। अब देखिए the power of OD, employee engagement and CSR. The case study showcase how a successful organization implemented OD, employee engagement, CSR practices to create a positive work environment. The result of this implementation have been highly beneficial for the organization and its employees. Best practices of implementing effective OD, employee engagement and CSR programs. Tailor initiatives to organizational culture. Ensure that initiatives are tailored to specific needs of the organization and its culture. Involve employees in decision making. Encourage employees to involve in the decision making process for initiatives. जिसमें again communication है, communication होगी तो आपका employee involve होगा, discussions होंगी तो employee के ideas आएंगे. So this is very important. Regular evaluation and improvement. Conduct regular evaluation of initiatives and make improvement as needed. जैसे हमने बोला पहले भी कि there are different ways to get the feedback. So utilize all those ways to get the feedback. By tailoring initiatives to organizational culture involving employees in decision making and conducting regular evaluation and improvements, organizations can ensure that their OD, employee engagement, and CSR programs are effective. Overcoming challenges in OD, employee engagement, and CSR efforts. Lack of resources.
Organization may not have the resources to implement OD, employee engagement, and CSR efforts. Lack of commitment, organization may not be committed to the long-term success of these initiatives. This is very important. आप शुरू कर देते हैं, sustainable नहीं बनाते. So whatever we have to start, we have to make it sustainable. Lack of communication, again, organization may not have effective communication strategies to ensure successful implementation. ये सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन आपने communicate नहीं किया, आप committed नहीं रहे, और आपके पास finances खत्म हो गए. So by understanding the common challenges in implementing OD, employee engagement, and CSR efforts, organizations can develop strategies and solutions to overcome them and ensure successful implementation. Effective communication strategies to maximize OD, employee engagement, and CSR initiatives. Set clear goals. Define objectives and expectations for employees and stakeholders. Clear goals are very important, and shared goals. Clear and shared goals. Clear goals तो हैं, employee से share ही नहीं हुए हुए. अगर आप employee को पता ही नहीं है कि आपके goals क्या हैं, कंपनी का गोल क्या है, CSR के लिए उसने प्लान क्या किया, तो अगर आपने उसको शेयर ही नहीं किया, तो अगर गोल इज नॉट शेयर्ड, whether it's clear or unclear, so it's useless. So your goals should be clear and shared. Provide regular updates, keep employees and stakeholders informed of the progress and successes, as I discussed, that keep them in loop. Encourage feedback. Solicit input from employees and stakeholders to ensure success. Feedback, constructive feedback is very important. There are different ways to get the feedback. Effective communication is essential for driving organizational development, employee engagement, and corporate social responsibility initiatives. Encouraging employee engagement activities, team building exercises, organize activities that encourage collaboration and communication among employees. Wellness programs provide resources and initiatives to promote physical and mental health. Team building exercises, again, mentoring opportunities. Create a program that pairs experienced employees with new hires. Team building exercises, there are different ideas for team building exercises. आप outdoor लेके जा सकते हैं, indoor कर सकते हैं, online कर सकते हैं. There are different tools available online. And आप गूगल करके बहुत सारी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस को लर्न कर सकते हैं और अपने एम्प्लॉइज के साथ कर सकते हैं. आउटडोर एक्टिविटीज में ले जाके उनको बहुत सारी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं. Wellness programs, you can have yoga classes for your employees. You can have a gym in your organization if you can afford. If you cannot afford, you can give them discount cards for gym. इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस तो होती है, लेकिन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट. एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए, वेलनेस के लिए, यू लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन हैव सम टॉक्स, जैसे होती हैं आप किसी साइकेट्रिस्ट के करा सकते हैं, टॉक्स करा सकते हैं, जो भी डिफरेंट करंट इश्यूज होते हैं उनके ऊपर जो इफेक्ट कर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे करा सकते हैं. ये सब चीजें, इस तरह की चीजें जो वेलनेस प्रोग्राम में आ जाती हैं. मेंटोर प्रोग्राम जो होता है, मेंटोरिंग प्रोग्राम ऐसे होता है कि जो एक एक्सपीरियंस आदमी है, कोई न्यू जो लोग आए उनको आप उनके साथ एंगेज कर देते हैं तो और ऐसा प्रोग्राम डेवलप करते हैं जिसे हम पीयर रिव्यू भी कहते हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ आप एक्सपीरियंस उनके शेयर करते हैं और न्यू हायर्स को आप एंगेज कर लेते हैं. सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड इनिशिएटिव्स आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट and fostering a sense of community among employees. Measuring employee engagement with tools and surveys. ENPS, Employee Net Promoter Score, is a survey that measures employee loyalty and engagement. Then GULAP, question 12, is a survey that measures employee engagement and job satisfaction. Surveys, there are different kind of surveys available online. आप उसमें से कोई भी उठा सकते हैं, आप अपना भी बना सकते हैं और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. It's all depend on you, that how you use these tools. Measuring employee engagement is essential for any organization to ensure that employees are engaged and productive. The tools and surveys mentioned above are great ways to measure employee engagement levels and provide feedbacks on how to improve. There are 3 different surveys, a kind of surveys, but there are a number of other surveys which you can Google and you can utilize it. Measuring corporate social responsibility, key performance indicators, sustainability reports, and stakeholder engagement. स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट, आपकी जो आउटर स्टेक होल्डर्स है उनकी एंगेजमेंट कैसे आपके साथ, सस्टेनेबल रिपोर्ट्स और KPIs आपके अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे. So CSR reporting and metrics are important for business to measure their performance.
रिपोर्टिंग मेट्रिक्स क्या है? स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है। स्टेक होल्डर आपके कौन स्टेक होल्डर? इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। इंटरनल तो आपके एम्प्लॉयज हैं, एक्सटर्नल आपके स्टेक होल्डर्स हैं। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है कि आपने जो काम शुरू किया वो सस्टेनेबल भी है या सिर्फ आपने उसको शुरू करके बस एक इनिशिएटिव लिया और उसके बाद हम भूल गए। एंड देन KPIs में क्या हमने इन्वॉल्व किया हुआ है अपने CSR गोल्स को। Embracing continuous improvement, organizational development, employee engagement, and corporate social responsibility. The continuous improvement cycle is identify opportunity in the process workflow plan. How can the current process be improved? Execute, implement, change, and review. How change work for the team. इस पूरे ये जो सर्कल है इसको हम कॉब लर्निंग साइकिल है। इट्स द सेम साइकिल जिसको हम यूज करते हैं। डिफरेंट ये एक थ्योरी है जिसके ऊपर इस साइकिल को प्लान किया हुआ है। So continuous improvement is essential for organizations to stay competitive and successful. It is important to evaluate, provide feedback, and adapt to ensure the organizational development, employee engagement, and corporate social responsibility efforts are effective. So it's a cob learning cycle जिसमें आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसको प्लान करते हैं सॉल्व करने का, फिर उसे आप एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको रिव्यू करते हैं। इट्स अ साइकिल, सो इट्स कीप ऑन गोइंग। Leading role in driving OD, EE, and CSR initiatives. Leadership plays an important role in driving organizational development, EE, and corporate social responsibility initiative. Leaders can set an example for their team by creating a supportive culture and aligning practices with organizational goals. 4 leadership styles of supportive accountability. High supportiveness किसकी है? Supportive accountabilities. And then high accountability, low supportiveness, and low accountability. अच्छा, 4 leadership styles of supportive accountability. जो unsupportive accountability is low supportiveness and total avoidance. अच्छा, इसमें कुछ तो ऐसी लीडरशिप है जो कि आपको completely सपोर्टिव अकाउंटेबिलिटी मिलती है, जिसमें आपको हर टाइम आपको सपोर्ट करते हैं। फिर अनसपोर्टिव, क्या आपके से अकाउंटेबिलिटी तो ली जाती है लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, उससे क्या होता है? लो हो जाती है सपोर्टिवनेस। फिर टोटल अवॉइडेंस, के पूछता ही कोई नहीं है कि आपको काम दे दिया है उसके बाद ना उस पर कोई क्वेश्चन है ना अकाउंटेबिलिटी है, ऑफ कोर्स इट विल बी लो सपोर्टिव। एंड देन सपोर्टिव अनअकाउंटेबिलिटी, कोई अनअकाउंटेबल है उसको पूछ ही नहीं रहा जिसको काम दिया हुआ है और उसको आप अनअकाउंटेबिलिटी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो देयर आर 2 वेज, एक अवॉइडेंस है अनअकाउंटेबिलिटी से, लो अकाउंटेबिलिटी एंड हाई अकाउंटेबिलिटी। इट्स अ प्रोसेस। आप इन 2 को देखें जो मिडिल में हॉरिजॉन्टल है। हाई अकाउंटेबिलिटी में जब आप बहुत ज्यादा हाई अकाउंटेबिलिटी रखते हैं तो फिर आपको सपोर्टिव अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए या अनसपोर्टिव। अनसपोर्टिव होगी तो लो सपोर्टिवनेस के साथ काम आपका कॉम्प्रोमाइज होगा। So, but this cycle doesn't fit with this CSR, but it is in another leadership styles. Different लोगों के leadership के different styles होते हैं। कुछ leaders ऐसे होते हैं जो सपोर्ट देते हैं फिर अकाउंटेबल करते हैं, कुछ होते हैं जो कोई सपोर्ट नहीं देते लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो टोटल अवॉइड करते हैं, काम देके पूछते भी नहीं है क्या हो रहा है और ना ही अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं बट अनअकाउंटेबिलिटी, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, सिर्फ सपोर्टिव होते। देयर आर डिफरेंट पीपल जो डिफरेंट तरीकों से लीडरशिप रोल्स में आते हैं। Fostering organizational development, employee engagement, CSR leadership through training and development program. This is most important. Highlight the significance of training and development in OD. Training and development programs can help organizations foster organizational development by providing employees with the skills and knowledge they need to succeed. Highlight the significance of training and development in fostering employee engagement. Training and development program can help organization foster employee engagement by providing employees with the tools and resources they need to be successful.
highlight the significance of training and development and fostering CSR leadership development programs. Training and development program can help organizations foster corporate social responsibility by providing employees with the skills and knowledge they need to lead initiatives that benefit society. Diversity and inclusion training and sustainability workshops. There are all those kind of trainings जिनको दे के आप ये सारी चीजों को develop कर सकते हैं अपने employees के अंदर. So most important thing is that you have to create a culture of training and development. जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हम एक ऐसा employee रख लें जिसको आपने position तो दे दी है बट उसको पता नहीं है कि उसमें learning कहाँ है या उसने आगे कैसे जाना है. तो over here the training and development is very important for employee engagement. Then achieving success through OD, employee engagement and CSR. Company A increased employee engagement by 20%. Company A implemented an employee engagement program that resulted in a 20% increase in employee engagement. Company B produced carbon emissions by 10%. Company B implemented CSR program that resulted in 10% reduction in carbon emission. ये environment के उस पे आ गया है. The company C improved customer satisfaction by 15%. Company C implemented an OD program that resulted in a 15% improvement in customer satisfaction. These success stories demonstrate the potential of OD, employee engagement, and CSR programs to achieve significant results for organizations. So these are the examples. There are other examples as well. So ये तो उन्होंने वो examples हमारे साथ share करी हैं कि 20% engagement किस वजह से employee retention हो गई है, ज़्यादा लोग रुक रहे हैं तो उससे employees are more engaged. Environment में उन्होंने काम किया है तो carbon reduction की है और then customer satisfaction पे हमने काम किया. Strategies for EE champions. Build relationships. Focus on building relationship with employees to better understand their needs and concerns. So this is what I always say, that focus on relationship. Listen to feedback. I started my session by saying this, that encourage employees to provide feedback and take the time to listen and respond. Celebrate successes. Recognize and celebrate successes to motivate employees and create a positive work environment. Strategies for CSR champions. Collaborate with stakeholders. Engage with stakeholders to ensure that CSR initiatives are aligned with their interests and needs. Transparent reporting. Provide regular update on the progress of CSR initiatives to ensure transparency and accountability. Leverage partnerships. Identify potential partners to help amplify the impact of CSR initiatives. By following these tips, CSR champions can ensure that their initiatives are successful and have a lasting impact. So collaborate with stakeholders ताकि जो आप कर रहे हैं वो उनकी goals के साथ align हो, उनकी needs के साथ align हो, ताकि जो चीज आप कर रहे हैं वो हवा में ना कर रहे हो. It should be aligned with the stakeholders. फिर ट्रांसपेरेंसी के जो आप कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, हर चीज क्लियर हो टू यू एज वेल एंड टू द स्टेक होल्डर्स एज वेल. और मोर लीवरेज मीन कि आप और पार्टनर्स को इन्वॉल्व करें ताकि उसी जिसका इम्पैक्ट इस CSR की वजह से होगा. Harnessing the power of sustainability and CSR trends, circular economy, social impact investing, diversity inclusion initiatives. They are the most important emerging sustainability and CSR trends. Diversity and inclusion के ऊपर पूरा आपने एक सेशन लिया है. So that is important कि diversity and inclusion के जो initiatives हैं, they are very important for sustainability and CSR trends. Key takeaways. Organizational development is essential for success. OD helps organizations to identify and address issues, create strategies and develop culture of collaboration and innovation. So जब आप OD की बात करें तो collaboration and innovation है. And employee engagement is key to organizational success. Employee engagement are more productive, have higher job satisfaction and are more likely to stay with the organization. तो जब आप employee engagement की बात करेंगे तो employee engagement का मतलब ये कि जो आपके employees हैं, they are retained, they are sustainable, they are more productive. So they will, when they are going to stay longer for the organization, so in the end, the organizational productivity will increase.
फिर CSR is important for organizational success. Its CSR initiative help organization to build trust with stakeholders, create positive brand image and attract talent. तो CSR से आपको क्या होगा? बेस्ट टैलेंट मिलेगा, ब्रांड इमेज होगा और आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा विद stakeholders. So OD, EE and CSR are all essential component of organizational success. ये मंसूर साहब के लिए अभी मंसूर साहब कैन यू प्लीज, ये मंसूर साहब की कुछ एक्टिविटीज हैं जो उन्होंने शेयर की हुई हैं, तो मंसूर साहब जरा बताएं आपने क्या कुछ किया हुआ है। अच्छा जी, हमारा बेसिकली हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था इन ICI पाकिस्तान, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन केमिकल सेक्टर एंड लाइफ साइंसेज में। वहाँ पे 2019 में 2018 में हमने स्टार्ट किया था। तो उसमें फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन से लोगों ने जो मैन आवर्स से वो स्पेंड किए थे CSR की एक्टिविटीज़ के अंदर, और ओवरऑल 1150 वॉलंटियर्स थे जो उन्होंने वॉलंटियर आवर्स जो उन्होंने स्पेंड किए थे। तो उसमें मैंने जो TCF सिटीजन फाउंडेशन के साथ और उसके अलावा फातमीद फाउंडेशन के साथ काम किया था उस इनिशिएटिव में। कुछ लोगों ने जो ओल्ड एज होम है वहाँ पे काम किया, कुछ लोगों ने वो जो कराची में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे उनके साथ काम किया। जो एक आपने देखा होगा ना, आर्टिफिशियल किस्म का वो बनाया हुआ उन्होंने, फॉरेस्ट बनाया हुआ है, अर्बन फॉरेस्टिंग, उसमें काम किया। तो फिर मेरे जो आर्ट्स थे सबसे ज़्यादा थे और मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे ज़्यादा था कि फातमीद के साथ मैंने ऑलमोस्ट उसमें मेंशन भी है अराउंड 193 जो ब्लड डोनेशन थे वो अरेंज करके दिए थे थैलेसीमिया के लिए ना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर इसके लिए मुझे लेबर कॉलोनीज में जाके काम करना पड़ा जो एलोकेट हुई हैं। तो ये एक इनिशिएटिव था। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे साथ साथ लिए थे उस वक्त, एंग्रो केमिकल ने लिए थे और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने लिए थे ना। तो ये फिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव अवार्ड होता था, वो फिर मुझे ये उन्होंने दे दिया था ना। तो ये फर्स्ट टाइम था। अब इसके बाद कंटिन्यूसली ये जारी रहा। फिर इसको मीडिया में भी हमने हाईलाइट करवाया क्योंकि फर्स्ट इनिशिएटिव था। तो फिर यानी कि उसकी वजह से हमारी ब्रांडिंग बड़ी अच्छी होगी ऑर्गेनाइजेशन की ना, यानी कि ओवरऑल। और ये डॉन में भी हाईलाइट हुआ और बहुत सी जगहों पे फिर हमने इसको हाईलाइट किया। तो ये था। यस जी, सेशन हमारा ऑलमोस्ट इस पे यहाँ पे है। हाँ जी, सो थैंक यू मंसूर साहब। आपकी इस तरह के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस ले रही होती हैं और देयर आर डिफरेंट आइडियाज एज वेल। So what we learned into action is we have discussed the importance of employing the knowledge gained to our respective organization, how it can help us reach our goals. We thank all participants for their time and attention in this session. So this is for you that you all were here. Now, this is the time if you want to discuss something about these initiatives, or if you need to have some ideas, we can discuss some ideas. या आपके पास कोई ideas हैं तो आप share कर सकें। जी बिल्कुल सही है। बल्कि अभी हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पास मौजूद हैं शहला, और अगर कोई और सेक्टर देखें तो वहाँ से हमारे पास तहमीना भी हैं, और आज एहतशाम सब जो हाईनून से आते हैं वो भी मुझे नज़र नहीं आए, और खिजर हैं। तो ये अगर मुझे बताएं, सबसे पहले शैला से मैं पूछना चाहूँगा कि शैला आप मुझे बताइएगा कि आपकी तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही कंसिडर की जाती है, वहाँ पे आप लोग CSR के कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई अपने लोगों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, या जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे थे उस कम्युनिटी को सर्व करने के लिए उसकी विसिनिटी में कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है? जी प्लीज। जी सर बिल्कुल सर, NTDC में भी हम डिफरेंट हमने एक्टिविटीज इनिशिएट की हुई है CSR के हवाले से। सर उसका एक तो हमारे पास स्कूल्स का सिस्टम है। पहले जो वापडा था, क्योंकि पहले तो एक ही एंटिटी थी, वापडा के अंडर डिफरेंट स्कूल्स काम करते थे, जो जिसमें जनरल पब्लिक के भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो भी उसमें एजुकेशन लेते हैं, और हमारे अपने एम्प्लॉयज के भी बहुत मिनिमम फी होती है, और उसका मतलब स्टैंडर्ड अच्छा होता है। क्वालिफाइड टीचर्स हमने रखी हुई हैं। डिफरेंट स्टेशंस पे स्कूल्स हमारे काम करें।
उसके अलावा सर प्लांटेशन की डिफरेंट ड्राइव्स इनिशिएट होती हैं टाइम टू टाइम, कि ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से मूवमेंट्स और ऑफिशियली लेटर्स वगैरह इनिशिएट किए जाते हैं, और इसको मोटिवेट किया जाता है, सब इनकरेज किया जाता है कि इन्वायरमेंट में बेहतर इम्पेक्ट डालने के लिए जो है हम जितना सही, होता थैंक है यू। मैक्सिमाइज करें अपनी प्लांटेशन एफर्ट्स कराते जी, हैं। जी सर, स्टूडेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के या डिफरेंट एचआर के भी, तो रेगुलर इंटर्नशिप्स भी अब समर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ऑफिस में होती हैं, डिफरेंट मतलब मुल्तान रीजन में भी होती हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो होती हैं। हमारे ग्रेड स्टेशन पे प्रैक्टिकली लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और उनको अवेयरनेस सिस्टम के बारे में दी जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्या आप लोगों के यहाँ क्या होता है, इससे हमें सीखने का मौका मिलता है कि हम कंपेयर कर सकें ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या होता है। और बेसिकली क्या होता है, जब CSR एक्टिविटीज हो रही होती है, जिसके ऊपर अब इसको ESG के ऊपर भी बात करते हैं हम जाके ना, सस्टेनेबिलिटी के हवाले से, तो वहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट भी गेन कर रही होती है ना, जहाँ पे काम कर रही होती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोग जिस एरिया में आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, आपका प्लांट लगा हुआ है, कोई भी है इशू, ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है, तो वहाँ पे आपकी एक्टिविटीज की वजह से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, और फिर रेपुटेशन तो होती है अच्छी है साथ में। फिर लोगों की जो इर्द गिर्द के रहने वाले लोग होते हैं, उनकी एंगेजमेंट आप लोगों के साथ बढ़ जाती है, उस इदारे के साथ बढ़ जाती है। ठीक है। और वो फिर कहते हैं जी हमारी तो जनरेशन हैं, जिनको यानी कि उनका होता है कि जी बाप दादा से लेके सब लोग उसी फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उसी की वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं, और उसके साथ वो प्राइड फील करते हैं कि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। यहाँ पे हमारे साथ तहमीना मुनीर हैं, जो उससे हैं, IT सेक्टर से हैं, सॉफ्टवेयर उससे वालों। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो आप थोड़ा सा अपना इनपुट दें कि आपका जो सेक्टर है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है, लोगों को एंगेज रखना होता है, लोगों को रिटेन रखना होता है, वो चैलेंज होता है। तो वहाँ पे आप क्या क्या करते हैं कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, और बाकी और इस तरह की एक्टिविटीज़ के पर्सपेक्टिव से, एम्प्लॉय एंगेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बताइएगा ज़रा। वालेकुम सर। अच्छा। सर मेरा जो अभी तक HR में करियर रहा है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। करंटली मैं एक IT फर्म के साथ हूँ। IT फर्म में सर सबसे बड़ा जो इशू होता है वो रिटेंशन का होता है। उसमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट नो डाउट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एंड चूँकि रिमोटली बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एम्प्लॉय एंगेजमेंट में आ जाती है वो कम्युनिकेशन आ जाती है। सो हम कोशिश ये करते हैं, चूँकि हमें जो है वो ऑनलाइन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो कोशिश ये करते हैं कुछ इस तरह की ऑनलाइन ट्रेनिंग ज़रूर हो, जिस पे जनरल टॉपिक्स पे जो है ट्रेनिंग हो, जिसमें हम उनसे बात कर सकें, हम उनका इनपुट ले सकें ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। अभी चूँकि ये IT जो फर्म है अभी इस तरह से पूरी तरह से डेवलप नहीं है, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन अभी पॉलिसीज़ की उस तरह से नहीं हो रही है। मैंने इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है सर, उसमें मैंने CSR एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो होते हुए देखा है। स्पेशली स्पोर्ट्स पर वो लोग बहुत ज़्यादा वो करते होते थे, काम करते थे। उनकी प्रॉपर जो है वो नेशनल लेवल पे जो है वो टीम भी थी, जिससे उनकी बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग होती थी। और इसके अलावा मेरा ख्याल है सर जो CSR है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर जाता है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके एम्प्लॉई की रिटेंशन, आपके एम्प्लॉई की लॉयल्टी जो है वो जो है वो बूस्ट होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अकाउंटेबिलिटी। वो सोशली आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन और उनकी कमिटमेंट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो मेरा तो सर CSR और इन चीज़ों का अभी तक का ये एक्सपीरियंस है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। राइट, जानने का मौका मिला, यहाँ पे बात करने का मौका मिला। सिल्वेनिया, अगर आप सुन रही हैं मेरा बात, तो आप अपना एक्सपीरियंस इस हवाले से शेयर करेंगी कि आपकी क्या लर्निंग है CSR एम्प्लॉय एंगेजमेंट के पर्सपेक्टिव में, प्लीज शेयर कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सो स्पेसिफिकली मंसूर साहब, आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट के हवाले से क्वेश्चन किया, क्योंकि आपके वो ब्रेक हो रही थी आवाज।
जी जी, मैंने दोनों हवालों से बात की ना, कि आपके एक्सपीरियंस में जो आपकी लर्निंग है, अभी तक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और आज के सेशन में भी हमारी डिस्कशन हुई है, तो CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी करें, और एम्प्लॉय एंगेजमेंट के हवाले से भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, तो बता दें प्लीज। Alright, thank you. CSR के हवाले से अगर कि एक मेरी एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा जो है ज्यादा टू बी वेरी प्रिसाइज, वहाँ तो CSR एक जो है एक डिपार्टमेंट या कह लें कि एक्टिविटीज और वो रही। फिर उसके बाद जो है डेवलपमेंट सेक्टर जब ज्वाइन किया तो इट वाज मोर ऑफ focusing on the and all. उस पल की मैं कि खान डेवलप जो हेल्थ केयर के जो है उनके सारे फोकस फोकस जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो ज्यादा आप अपना ना कमेंट लिख के देते हैं, क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, तो या मुझे नहीं आ रही। मंसूर साहब, आपने सुना? जी नहीं, इनकी आवाज में ना वॉइस में डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा थी ना। आप मैसेज लिख दें, पहले भी आपने लिखा था तो बड़ा अच्छा लिखा है, सो यू कैन राइट इट डाउन सो वी कैन गो थ्रू विद दैट। यस। जी जी। खिजर, आप जरा खिजर को हम थोड़ी सी जहमत देंगे। खिजर का मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और आपको बताना चाहूँगा कि आप खिजर जो है एक जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी है, एक अच्छे क्रिकेटर भी है ना खिजर। ठीक है, तो खिजर बताइएगा आप अपने। सर 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 अस्सलाम वालेकुम। सर ये कि सर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो रिसेंटली खत्म हो गया था मेरा, अभी उन्होंने दोबारा नहीं चांस दिया मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन ये था कि सर अगर CSR की हवाले से बात करें तो सर यहाँ पर मैं आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि मैं जब PCB के अंडर रहा हूँ तो हमें मुख्तलिफ ये जो थे ना, होते नहीं है चैरिटेबल मैचेस वगैरह, वो जी जी। हमें कहते थे ज़्यादा फोर्स आउट करते थे कि आप वो ज़्यादा खेलें चैरिटी के मैचेस जो होते थे। तो सर ये होता था कि हमें मैच फीस वगैरह भी थी, वो भी नहीं मिलती थी, और ये था कि हम डिफरेंट NGOs वगैरह जो थी ना, हमने उनको भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। मतलब कि वो या तो एक एक तो ये होता था कि उनको फ्री टिकट्स वगैरह भी मिल जाती थी स्टेडियम में आने की, फिर इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स होते थे, उनके साथ एक्सपोजर भी इनका काफी ज्यादा हो जाता था। तो इस तरह से जो था ना सर, ये CSR के हवाले से ये था कि हमने काफी जो थे ना चैरिटेबल मैचेस वगैरह इस हिसाब से काफी मैंने खेले हैं इनके साथ जो है। सही। ग्रेट, जबरदस्त। हमारे यहाँ अभी CSR पे काम हो तो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में CSR के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और हमें भी उम्मीद है कि जैसे जैसे वैल्यूज डेवलप होती जाएंगी, जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती जाएंगी, जैसे जैसे एवोल्यूशन आती जाएगी, उस तरह से CSR भी ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा सोसाइटी में और अपना रोल प्ले करेगा। और उससे जो ओवरऑल जो कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। राइट। जी जी, सिल्वीनी आपका पता लग गया, डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी जी, थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोगों ने शेयर किया हमारे साथ। कोई कोई क्वेश्चन और कोई बात करना चाहें, कोई कमेंट किसी इस हवाले से कोई बात हो, और कोई भी कमेंट देना चाहें तो आप बात कर सकते हैं प्लीज। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस हवाले से तो नहीं लेकिन हेलो। मेरा वो क्वेश्चन है। बोलिएगा। सर ये आजकल ना ये आप देखते हैं मुख्तलिफ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह जो होती हैं, इसके अंदर ये इन लोगों ने एक नई चीज बीच में ऐड कर दी हुई है, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर करके इस तरह का ना। तो ये मैंने पता करना था, ये सर ये क्या चीज है? कभी वो लोग जो होते हैं HR मैनेजर मांग रहे होते हैं, अब राइट नाउ जो है ना एक नई चीज आ गई टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर। ये समझ नहीं आती, ये तो मैं समझ रहा था कि पार्ट ऑफ HR होता है, लेकिन ये अब इन्होंने नई कोई चीज निकाली है अपनी तरफ से। इस हवाले से मैं चाहूंगा कि हमारा ना एक सेशन हुआ है टैलेंट एक्विजिशन के ऊपर, उमाइमा ने लिया था ना। ठीक है जी, टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन, उसकी प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे शेयर कर दी। अमाइमा बेसिकली हमारी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, पार्ट ऑफ एलुमनाई भी हैं, और इस वक्त जो चार्टर्ड CA की बड़ी फॉर्म में
ए फर्गूसन, CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हवाले से ग्लोबली जो ऑडिट फर्म सबसे मशहूर है वो WPC है ना, PwC, प्राइस वाटर कूपर, ठीक है, उसकी पीपल मैनेजर है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया था। मैं फिर यहाँ पे फिर भी बात करना चाहूँगा टैलेंट एक्विजिशन के हवाले से, कि ये बेसिकली प्रीवियसली क्या होता था, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होती थी ना, उसकी बात की जाती थी। सर ये आपने इसके बारे में सुना होगा खिदर, रिक्रूटमेंट एंड ये सिलेक्शन, सर ठीक है। बिल्कुल सर, ये तो पार्ट है एचआर का, ये तो की पार्ट है एचआर का। जी जी बिल्कुल, इस टर्मिनोलॉजी को अब चेंज करके ना एक्वायर करना, आपको पता है ना एक्विजिशन क्या चीज होती है, कि किसी बिल्कुल चीज सर। को एक्वायर करना ना, अब एक्वायर करने के प्रोसेस है कि आप टैलेंट को सर अट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसको एक्वायर कैसे करते हैं, फिर उसको डेवलप कैसे करते हैं, उसको रिटेन कैसे करते हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। एक्वायर सर करना, अट्रैक्ट करना, एक्वायर करना, डेवलप करना और रिटेन करना, ठीक है। जी सर। तो उसकी मजीद जो पहले हम सिंपली बात करते थे जी, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, अब ये इवॉल्व होके इस फॉर्म में आ चुके हैं। और ये टैलेंट एक्विजिशन अब जैसे जैसे HR अपने डिफरेंट स्ट्रीम में बाइफरकेट होता जा रहा है ना, जिसमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, टैलेंट एक्विजिशन है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें आपको नजर आएंगी। तो इस तरह इनकी कैरियर की स्ट्रीम भी डेवलप हो रही है, ठीक है। अब आपको टैलेंट सर एक्विजिशन के अंदर एग्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑफिसर भी मिलेंगे, असिस्टेंट मैनेजर भी मिलेंगे, मैनेजर भी मिलेंगे, और उसके अलावा सीनियर मैनेजर भी मिलेंगे, HRBP भी मिलेंगे, HRBP भी हमने पढ़ा है, HRBP भी मिलेंगे, और उसके बाद जनरल मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन भी मिलेंगे, और इससे ऊपर भी डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट तक आपको नजर आएंगे ना। स्ट्रेटेजिक ये काम होता है टैलेंट एक्विजिशन के अंदर, आपने फ्यूचर की भी नीड को फुलफिल करना है, ठीक है, और अपनी इंटरनल इक्विटी का भी ख्याल करना होता है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का भी ख्याल करना होता है, इंटरनली भी टैलेंट पूल डेवलप करना होता है अपने लोगों के लिए, सक्सेशन प्लानिंग भी करनी होती है, और एक्सटर्नली भी उसी सेक्टर के अंदर, जिस सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हैं या उससे मिलते जुलती और चीज़ों में, वहाँ से भी आपने टैलेंट पूल हर वक्त डेवलप करके रखना होता है, ताकि आपकी टैलेंट एक्वायर करने की जो स्पीड है वो जल्दी हो जाए। कोई अगर रिसोर्स छोड़ के जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, तो विद इन वीक, विद इन डेज आप फौरन उसकी जगह पे किसी को प्लेस कर सकें, ठीक है। तो ये पूरा एक स्ट्रेटेजिक काम है टैलेंट एक्विजिशन, आप उसको देखिएगा जरूर। वो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की हुई ये है, सर। और मटेरियल भी शेयर जी किया सर। हुआ है, तो आपका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता हो आपका, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक। श्योर सर। और किसी और को भी कोई ऐसा कोई हो, कोई कंसेप्ट क्लियर करना हो, या कोई कंसेप्चुअली को बात करनी हो, तो भी वहाँ पे ग्रुप में बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है मैम, फिर हम इसको यहाँ पे Wind up करते हैं, ठीक है। end करते हैं, और फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कल। आप लोगों का पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन के ऊपर सेशन है, और वो जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर और एवरी। आज हमने डिस्कस किया, हमने कम्युनिकेशन पे ही डिस्कस किया है कि इन सब चीजों के लिए कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ डू यू कम्युनिकेट, दैट यू विल लर्न टुमारो। वो उसके बारे में जाना। पर्टिकुलरली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक स्पीकिंग। HR के लोगों को मैंने बहुत दफा देखा है कि वो पब्लिक स्पीकिंग को वो बिल्कुल उससे भागते हैं, उससे ना अवॉइड करते अवॉइड करते हैं उससे। वो हालांकि पब्लिक स्पीकिंग हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ जाती है, क्योंकि सोर्स ऑफ, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो फिर चलते हैं। थैंक यू मैडम, आपका क्या, आपने आज का सेशन बड़े इंटरेक्टिव वे में लिया, और हम लोगों ने बहरहाल ज्यादा डिस्कशन की है, लेकिन चले, बाकी लोगों ने भी किए क्वेश्चन। चलिए, हाँ, ठीक। मैं आपको सब रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा और मटेरियल भी शेयर कर दूंगा ना, ठीक। बहुत शुक्रिया थैंक आप यू सो मच, थैंक यू। सब। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।